Standard 8 Maths, Chapter 11 Statistics. Practice set 11.1. The following table shows the number of saplings planted by 30 students. Fill in the block boxes and find the average number of saplings planted by each table. So let's see, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको total number of saplings एवरेज ढूंढ के निकालना है. सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस सम्स. सी नंबर ऑफ सैपलिंग्स, ये क्या बता रहा है कि एक पौधा कितने बच्चों ने लगाया, 4. फिर 2 पौधे 6 बच्चों ने लगाए, 3 पौधे 12 and 4 8. So what we have to do exactly over here, we have to multiply 1 into 4 1. हमको यहाँ पे क्या करना है, ये देखो, ये 1 into 4 ऐसे मल्टीप्लाई करना है. सो 2 into 6, 3 into 12 and 4 into 18. So 2 6 are 12, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 36, 4 8s are 32. So total of इन सब का टोटल करना है यहाँ पे. 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14. So 4 and 1 carry. 3 + 3 6 + 1 7 + 1 carry 8. We have to do total of this frequency also. So 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 8 20, 0 2 carry, 2 + 1 3. So total of frequency is 30 and frequency multiply numbers of sapling. ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो इसका टोटल 84. सो मीन इज इक्वल टू, मीन मीन्स एवरेज. तो ये जो है 84, यहाँ हमको लिखना है सिग्मा. दिस साइन इज सिग्मा, दैट मीन्स टोटल ऑफ f1 into x1 upon n numbers. So this we have 84 and here we have 30. So 84 divided by 30. So what we will do, 3 1s are 3, 3 0s are 0. Same table with 3 table, 3 2s are 6, 8 में से 6 गया 2 बचा 24, 3 8s are 24. So now 28 upon 10. So whenever you have 1 and 0, नीचे जब भी आपको 10 100 1000 मिल रहा है, that means you have to take decimal. 10 का आपको डेसिमल लेना है. पीछे से ये यूनिट है तो यहाँ पे टेंस. सो 10 का डेसिमल. सो दिस इज योर आंसर. सो यह 2.8 इज द आंसर. सो यह 2. द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 2.8. Second question. The following table shows the electricity in units used by 25 families of Iklara village in a month of May. Complete the table and answer the following questions. So our first step will be multiply this and this. ये जो electricity used किया है 25 families ने, और ये इनको हम multiply करके यहाँ पे लिखेंगे. 7 zeros are 0, ये और ये multiply हो रहा है. So 7 zeros are 0, 7 3s are 21, 2 5s are 10, 1 carry, 2 4s are 8 9. Then further 480, 5 into 75 375, 3 9s are 27 0. So now next step is to do total of this. 7 8 9
10, 17, 17, 3, 20 and 5, 25. So 25. See, they said 25 family. Here our total is correct, 25. And now we have to do total of this. 0 plus 0 plus 0 plus 5. So 5. 9 plus 1, 10, 18, 19, 20, 25, 25 and 7, 32, 3, 3, 4, 5, 5, 8, 8, 12, 12, 13, 14. So total. Now, what question they have asked? हमको क्या क्वेश्चन पूछा गया है? How many families use 45 units electricity? कितने फैमिली में? सो इलेक्ट्रिसिटी यूज 45, ये है 45. कितने फैमिलीज? नंबर ऑफ फैमिलीज 2. सी या 2. सो आंसर इज 2 families use 45 units of electricity. So state the score, the frequency of which is 5. So यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 यहाँ पे है, तो उसका स्कोर कितना है? 75. सो 70. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड n. सो n वी हैव ऑलरेडी फाइंड, सो n इज इक्वल टू 25. फाइंड टोटल ऑफ सिग्मा f1 and s1. सो दैट इज ऑल्सो 1425. हमने पहले ही टोटल करके ढूंढ के रखा था. सो हियर इज द आंसर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे. मीन ढूंढने बोल रहा है. मीन मीन्स यू हैव टू डू सम. मीन इज इक्वल टू एक्स बार. सो यहाँ पे क्या करना है? टोटल ऑफ f1 x1 अपॉन n. सो we have 1425 upon 25. So यहाँ पे देखो 1425 upon 25. We will take table of 5. 5 का टेबल. 5 5s are 25. 5 2s are 10. 4 carry. 5 8s are 40. 2 carry. 5 5s are 25. Again 5 1s are 5, 5 5s are 25, 3 carry, 5 7s are 35. So 75 is the answer. You have 57. 57 is the answer. Third question, the number of members in the 40 families in Bilar are as follow. Prepare a frequency table and find the mean of the members of 40 families. First, you draw column in this pattern. 3 रो में कॉलम बनाना है. यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स x1 लिखना है. देन नंबर ऑफ फैमिलीज f1. सो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर 1, मतलब कितने घरों में बस एक ही मेंबर है. Then we have 2, then 3, फिर 4. कितने घरों में 4 मेंबर है? कितने में? 5. And how many families? 6 and 7. So now here you have to count. हमको गिनना है. So 1, 2. So 2 families. 2 फैमिली में. Now here 2. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 families has 2 members. Now 3. So 1 2 3 4 5 6 7. 7 families has 3 members. Now 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 families.
Similarly 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. Then 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 families. And now 7, 1, 2, 2 families. अभी हमको क्या करना है? Now what we have to do? We have to find out total. 1 2 is 2, 2 8 is 16, 7 3 is 21, 4 8 is 32, 5 7 is 35, 6 6 is 36, 7 2 is 14. Okay, f1 और x1 means f1 multiply by x1. So ये multiply किया. Now here n. Total of this and here total of f1 x1. So 8 9 10 17, 17 and 8 25, 25 and 7 32, 32 38, 38 39 40. So see 40. उन्होंने बोला भी है 40 families. Total of this. So 6 7 8 9 10 11 16 22, 22 and 4, 22 and 4, 26 to carry, 5 5, 8 8 9 10 11 14 and 15. Here 156. So average निकालना है. Total of f1 into x1 upon n is x1. So we have 156 upon 40. इसका डिवीजन 156 upon 40. 4 1s are 4, 4 zeros are 0. 4 3s are 12, 4 9s are 36. So again नीचे 10 आया यानी डेसिमल जाएगा 3.9. So here answer is 3.9. 4 10s are and 4 39s are. So 10 का डेसिमल गया 3.9. So the mean of the members of 40 families, mean equals to 3.9. Now let's see the last sums. Okay, you have to do the number of science and mathematics projects submitted by model high school. So number of project in last 20 years और ये frequency होगा. So यहाँ पे 1 2 3 4 and 5. So you have to write 1 2 3 4 and 5. Now how many 1? So 1 2 3. So we have 3 2 1 2 3 4 5 6. So 6 3 1 2 3 4 5 6. So 6 1 2 3 3 and 5 is 1 and 2. Now what we have to do? We have to multiply. 1 3 is 3, 2 6 is 12, 3 6 is 18, 4 3 is 12 and 5 2 is 10. So for 8 9 10 11 12 15, 1 carry 2 3 4 5.
So this is what total of F1, X1, and here number 6, 6, 12, 12 and 15, 15 and 5, 20. So again mean equals to total of F1 into X1 upon N. So 55 upon 20. 55 upon 20. So here 2 ones are 2 zeros are 2, 2 twos are 4, 1 carry 2 sevens are 14. 15 में से 14 गया 1 बचा डेसिमल. Then 2 fives are 10. But we have one more 10 in decimal. So उसका भी डेसिमल जाएगा. सी आपको अभी ऐसा मिला है. तो ये एक डेसिमल है और ये तो ये बन जाता है 100. ऑलरेडी 10 का डेसिमल है, नीचे और एक 10. सो बन गया. इसको अगर हटा के नीचे लेके आए तो ये बन गया 100. सो 275 अपॉन 100. सो डेसिमल ऑफ 100 विल बी unit tens 100. So this is the answer to decimal 75. So mean of the data is 2 decimal 75.